So here we are, Streets Professional presents Oh My God, Face of the Year Season 3, powered by The Resort, co-powered by Decot Fashion. The finalist home for the next 3 days and the battleground for what's incoming. यहाँ पे दोस्ती होगी, फाइट्स होंगी और कहानियाँ लिखी जाएंगी. Hi, my name is Ritik and I am from Mumbai. I'm someone who believes balancing passion with creativity and ambition is must. Being into a creative and digital field working as a social media professional, I'm someone whose heart lies in creativity. Hi, this is Jasmine Daira and I'm from Gujarat. By background, I'm a doctor and runway fashion model. I'm here to grow, learn and compete in OMG Season 3 as a proud contestant from the Gujarat. Hi everybody, my name is Rachna Bansal. I was born and raised in Rajasthan, but from past 1 decade, I am staying in Bangalore. And here I am today in Mumbai. About myself, I would like to say that I'm very dedicated, I'm hardworking, I'm passionate. Fun fact, I have a brown belt in Karate. I was the RJ in Apno Radio Banasthali. Hello everyone, myself Asa Bhadoria. I am from Madhya Pradesh, Gwalior. Currently I am studying Bachelor of Designing from Punjab Lovely Professor University. I am passionate about modeling, that's why I am in the OMG Face of the Year Season 3. Hello everyone, I am Donna from the beautiful city of Kolkata. I completed my Masters in Chemistry and now pursuing Masters in Education. So I am a model and dancer by profession. So I am here to not only to win the pageant OMG Face of the Year, but here to inspire women who are unseen. Hi guys, my name is Piyush Lalwani and I am from Mumbai, Maharashtra. By profession, I am an actor and a model and I am here at OMG Season 3 to showcase my talents, test my abilities and swipe the crown away of Mr. OMG Face of the Year Season 3. Thank you very much. My name is Pranav Nair and I am here to set the stage on fire. हूँ तो मैं केरला से बट रगों में है मुंबई का खून. हूँ तो मैं केरला से बट रगों में है मुंबई का खून. आया हूँ इस मंच पर दिखाने इस मंच के लिए मेरा जुनून. And I am here with only one desire: inspire as many people as possible towards mental fitness and sustainable fitness. So that's me. Thank you so much. Hello, my name is Praveena Mandan. I am from Raipur, Chhattisgarh, currently based in Mumbai. I am a devoted social activist, social media influencer and fashion enthusiast. Hi, I am Priyanka Panchal. Born and brought up in Mumbai, currently working in Bangalore with a design agency as a client servicing head. I am 27 years old. I was always passionate about modeling, but really didn't know where to start. And I came across OMG. And OMG is the only platform where I can show my personality, my true self and my style. Hi, my name is Gagan Thakur. Basically, I'm from Saharanpur, Uttar Pradesh, but from last 4 years, I'm working in Bangalore. By profession, I'm a commercial officer, and I would like to say thanks OMG who gave me a great opportunity, and I'm very much excited to showcase my talent in Season 3. See you there. Hello everyone, I'm Rashmita Shettigar. I'm 26 years old. I hail from the beautiful town of Udupi, Karnataka, currently living in Mumbai. I am a practicing cardiac physiotherapist pursuing my passion for modeling. I feel so grateful to be a part of OMG Season 3. Can't wait to see what comes next. Thank you. Hi, my name is Akshay Nagar. I am 29 years old. I am from Ghaziabad, where the dreams are loud and the ambition is louder. From regular 9-to-5 job to chasing the spotlight, my journey has been real, raw and just getting started. Dear Crown, here I come. Just wait for me. See you. Hello, I'm Ahana Chauhan. I was born and raised in Mumbai. I'm a professional actor model and today I'm here at OMG Face of the Year Season 3 to have new experiences, meet some lovely people and obviously to win that crown. हेलो जी, नमस्ते. गोवा का बंदा हूँ मैं, आगी मेरा नाम. थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा कमीना, पर सबका दिल का राजा. ओके, एंड फिटनेस, एक्टिंग, मॉडलिंग ये है मेरा पैशन और OMG Season 3 के लिए आया हूँ मैं जीतने. Alright, so I'm all set
to have fun and to win OMG Season 3. Thank you. Hi, the name is Nitesh Kumar Ramesh. I'm 25 and I'm from Chennai. I lead a corporate team by profession and I'm an aspiring actor and a model by passion. I've been a brand model for Twin Story and I'm a sponsored athlete of Bolt Nutrition and UFit. And I create a lot of contents to spread positivity and kindness. I'm here to leave a mark that crows will follow. Thank you. Hello, I'm Khushi Gupta. I'm 20 years old. I come from Hyderabad. I'm currently pursuing mass communication and journalism. I'm a travel enthusiast and I enjoy dancing. Few of my hobbies include sketching, painting and modeling. Hello everyone, my name is Rajiv Pawar and I am from Hubli, Karnataka. So I'm a sportsman, engineer and a model. So here I am in OMG Season 3 to meet new people and make some good connections. And also to win the title of OMG Season 3. हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजान खान और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ. रिसेंटली मुंबई में रहता हूँ. आई डू मॉडलिंग एंड एक्टिंग. ऑल्सो आई एम ए स्पोर्ट्समैन पर्सन. और इस बार मैं आया हूँ OMG सीजन 3 को जीतने के लिए. Hi guys, my name is Prisha Bakshi. I am actually residing in Mumbai right now and I'm currently doing fashion designing. I'm in my second year actually. And the reason I came to OMG FOY is because I'm really interested into modeling and I wanted to see where this could get me and to further my journey. Hello everyone, my name is Aryan Chawla. I'm 27 years old. My height is 6'3" and I'm from Daman. पंजाब का लौंडा आ चुका है OMG के प्लेटफॉर्म पे. By profession, I am a businessman, but by passion, I am a fitness and lifestyle influencer. जैसे ही मुझे पता चला OMG Season 3 is going to happen, I just came over here to conquer the game. आया हूँ तो जीत कर ही जाऊँगा. They've seen each other online, but now they're going to live together, eat together and compete against each other. Hello everyone. Everyone wants to know who they're going to be stuck with tonight, right? One bowl is for the boys and one bowl is for the girls. Pick a chit and find out who your roommate is. Some of you look thrilled, but some of you look really nervous. Either way, get comfortable or uncomfortable. While the Face of the Year contestants are getting ready for a lunch with the general manager of the resort. Hello everyone. Hello. Welcome to the resort, Mumbai. My name is Abhijit Adurkar and I'm the general manager of the property. Lovely hosting you all here at this property. Welcome to the OMG Face of the Year season. It's always a pleasure to host OMG with us. So it's a beautiful property and we've curated next 3 days for you. And I'm sure you'll have a wonderful time with us. Yes. I would just like to hear that you've just checked in. I would just like to know more about how is your experience so far. I mean, it's just a splendid resort. I mean, all the amenities put together under one roof with the serene view of the ocean and tranquility of the nature. It's just so easy to disconnect from the hustle of Mumbai, right? So it's just amazing here. Great. So it's actually really an amazing experience to stay over here. This is the first time actually I'm staying in the resort, and I'm also a sportsman, and I see that explored that there is a pickleball court over here, there's a swimming, there's basketball court, and instead of staying over here, and we can also stay fit as well. So that's a really amazing experience. Hi sir, I would like to congratulate you and the team for having such a beautiful property in the middle of Mumbai, you know, away from hustle and bustle of the city. This place is a gem. Okay, when me and my fellow models, we got in, we went outside and we took lungful of air, fresh air, and it was amazing. Also, I would like to call out that you have such cute animals on the property and we played with them. It was such a stress-free experience. So thank you so much. Thank you. Glad to know such wonderful experiences. And just to start, you still have another 2 days to go. So I'm sure you'll have a wonderful experience. I'm wishing you all the best. Thank you. And let's enjoy the meal. Yes.
हाथ में scissors, आंखों में ambition. The heat's building on both the sides. असली गेम तो अब शुरू हुआ है. The hairstyle icons are finally getting started. Product, techniques, under the expert guidance of Parimal Mehta, Shireen Merchant and Hina Dalvi. हेलो हेलो, दिस इज परिमल फ्रॉम ब्लैंक कैनवस मीडिया और आप सब आए हैं OMG सीजन 3 स्ट्रिक्स प्रोफेशनल हेयर स्टाइल आइकन 2025. 4 मेंटोर्स डे 1, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा काम. हम सब मिलके आपको बताएंगे कि टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में कितना दम है. सो लेट्स सी कि क्या होता है आज, कितनी घमासान युद्ध होता है, कितना सिखाया जाता है, क्या होता है. और इसके लिए you'll have to keep watching this season for now. Okay, I'm getting late. I'll see you back after the short break. Hi, my name is Priyanka. I am from Kolkata. मैं लास्ट 4 ईयर से मैं इस प्रोफेशन में हूँ. मेरा नाम मोहम्मद आकिब है. मैं बरेली यूपी से हूँ और मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और हेयर ड्रेसिंग मेरा पैशन है. Hi, this is Salim Surawala from Mumbai, Maharashtra. I'm having experience last 10 years working in the industry as a hairdresser. I'm having a salon and I love to work because there's a lot of creativity in my passion. My passion is my creativity. Hi, my name is Kunal Verma. I am from the Indore. मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी जो जर्नी है, अगर मैं एज एन हेयर स्टाइलिस्ट की जर्नी को बोलूँगा तो मैं 10 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आज भी मैं लर्नर हूँ, आज भी कुछ नया सीखता हूँ. Hi everyone, this is Bhaskar Saikia from Guwahati, Assam. Academically a medical student but professionally a hair stylist, and I have been working in this industry since like last 10 years and I am enjoying my journey. Hi everyone, my name is Dilshad Ansari. I am from Delhi और मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 14 to 15 years का एक्सपीरियंस हो चुका है. Hi, myself is Keshav. I am from Bangalore, Karnataka, and I am in this industry past 10 plus year. And thanks for Streaks Professional OMG Face of the Year Season 3. Hello, so my name is Rumit Garge और मैं वडोदरा गुजरात से बिलोंग करता हूँ. So इस इंडस्ट्री में मुझे 10 plus years का एक्सपीरियंस है. मेरे फादर से मैं इंस्पायर्ड हुआ था, लाइक ये हमारा फैमिली बिजनेस था. हाय, मेरा नाम बाबू, कर्नाटका, बेंगलुरु सिटी से आया हूँ. हेयर स्टाइल एक्सपीरियंस 17 साल से है. OMG सीजन 6 प्रोफेशनल हेयर स्टाइल आइकन 2025 फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं. बहुत खुश हो रहा है फैमिली. हाय, मेरा नाम मयूर गोहिल है. मैं माधापर गुजरात से हूँ, जहाँ पे हेयर इंडस्ट्री का इतना है नहीं, अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है. मुझे ये फील्ड में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है. Hello everyone and welcome to OMG Season 3 Strix Professional Hairstyle Icon of the Year. I'm very happy to see all of you. Are you all excited? So to start and begin with, I thank all of you to reach here and to make sure that you have been on this platform competing with so many people. And to thank you, I've got some people from the Strix Professional Hair Color team and they are going to talk to you. So very first, let me introduce you to the Head of Professional Division, Rochelle Chabra ma'am. She should be the first person to talk to all of you. Followed by that, you have other people to talk to you. And I'll catch you later. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Journey कैसे रही आप लोगों की? Comfortable था? बारिश की वजह से कोई delays? Fabulous. And now let me congratulate you all for reaching the finale of the OMG Season Strix Professional Hairstyle Icon Awards. Big round of applause to all of you. बहुत सारे जो participants थे, उनमें से आप लोगों को चुना गया है. तो you are very very special. Already आप लोग winners हो because you all are here on this platform. So now you have to fight for that. Hi guys. Today is day 1 and I'm super excited for my mentoring session with the finalists for this competition, and let's see what happens. It's going to be a great day with so many mentors. Not only me, Hina Dalvi, Parimal, all of us are going to give them some nice pep talk and prep them with all the parameters for the competition. So stay tuned for further. Bye. All
win a competition. So that is the direction. So that clarity of mind is important. If you have that thing, I want to give all that it takes. Texture, ये अगर ये मेरा है, is one part of the mover. Mover में बहुत सारी चीजें रहती हैं. But I'm just going to make it simple. इसमें क्या आपको दिख रहा है? Texture. Texture दिख रहा है और क्या दिख रहा है? Movement दिख रहा है. और उसके बाद मॉडल सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग बैक इन टाइम बिकॉज ऑलरेडी आप लोग तो सिलेक्ट हो गया, पर आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू इट के कुछ और पॉइंटर्स में मैं ऐड कर सकूँ कि नाउ यू वांट टू डू अ फोटोशूट. सो मॉडल, सो इफ़ यू वांट शॉर्ट हेयर, पता है ना, अगर आप पेड मॉडल्स लेते हो, ये तो लकी है कि हम सैलून में काम करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को हम मॉडल बना देते हैं. एक्चुअली फोटोशूट को हम इतना सीरियसली नहीं लेते, और अगर हम अच्छा सीरियसली ले और अच्छी मॉडल्स को सिलेक्ट करें, 70% of your work is done when your model is right, because she has the confidence to carry that look. If you do a sharp look on a clumsy looking model, how she'll look? She'll look like a fool out there, like a clown. Okay, a model who has confidence, and the way she carries herself and the way she poses in front of the camera. There's a some party looks, hair and makeup look दे सकते हो. 3-4 अलग-अलग टाइप के पिक्चर्स लेके, इंस्टाग्राम तो है ही, आप कोई पिक्चर्स को अगर आपका नहीं सिलेक्ट हो, पिक्चर्स वेस्ट नहीं देने जा सकते. हेलो, गुड आफ्टरनून. तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग मटेरियल लाई हूँ. ऑफ कोर्स आप लोगों के पास ये सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी है, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम रेफरेंस, एंड दैट्स व्हाई इवोक इज द रेफरेंस. एवरीबडी नोज इवोक इज द चैलेंज. सो वी विल स्टार्ट विद दिस. आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस. आप लोगों ने एक राउंड पहले कंप्लीट किया जहाँ पे हमें बहुत सारी एंट्रीज आई, और हमने सेलेक्ट किए टॉप 100. एक्चुअली 93, हम 100 पे भी नहीं पहुँच पाए बिकॉज काम जिस तरह से हम चल रहा था, एंड मल्टीपल एंट्रीज भेजा लोगों ने, इसलिए 100 हो रहे थे. आफ्टर दैट दिस इज द फाइनलिस्ट राउंड वेयर वी हैव द टॉप 10 फ्रॉम अक्रॉस इंडिया सिटिंग विद अस इन दिस रूम. तो मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना है. कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको? Who wants to start? बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ मैं कि लाइक टॉप 10 में लाइक इंडिया के इतने सारे स्टाइलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और टॉप 10 में मैं हूँ. सो इट्स रियली प्राउड. आज थोड़ा डर लग रहा है जब ये प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. ओके, नर्वसनेस भी है थोड़ा सा. बेसिकली काफ़ी प्राउड मोमेंट है. इतने सारे कम्पीट किया, उसमें से टॉप 10 में आना, ये भी बहुत बड़ी बात है. बाकी मेहनत करेंगे, होगा वो देखा जाएगा. एक्साइटेड हूँ, और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ इतना बॉयज़ के बीच में मैं ओनली गर्ल्स, तो इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एकदम टू द गर्ल पावर, एकदम फ्लोर, एकदम सुपर एक्साइटेड हूँ. ये मेरा सेकंड टाइम है. लास्ट टाइम मैं टॉप 10 में था, फाइनलिस्ट में आया था, लेकिन मैं बाहर चले गया, तो फिर इस बार ट्राई करा. एंड थैंक यू सो मच जो टॉप 10 में लेने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है टॉप 10 सेलेक्ट करने के लिए. ये सेकंड टाइम हो फाइनलिस्ट. वेरी नाइस. इस बार जरूर ट्राई करूँगा. It's motivating me to achieve my goal. So Okay, trust me, it's not going to take you to the winner position of the competition. You have to have your strategy. हर किसी का कल्चर अलग है. जो हेयर स्टाइल आप करोगे ना, अपना खुद का कल्चर लेके आओगे कहीं ना कहीं. कलर्स में वो टाइम पे प्लैटिनम ब्लॉन्ड्स, जेट ब्लैक कलर्स और कॉपर्स का फैशन शुरू हुआ था. दिस इज व्हाट द 60s looks like. If you go to the 70s, दिख रहा है एक चेंज in the pictures. What has happened from going all tied up, from going all decked up, all set up, we have not now started going a little natural. 10 आना, it's a very big thing. And मैंने सुना बाहर भी कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म तक. So ये एक जगह है जहाँ से आप आ तो गए, बट इसके बाद क्या? मेरा क्वेश्चन हमेशा सारे कंटेस्टेंट से होता है जो OMG फेस ऑफ द ईयर सीजन 1 और 2 भी कर रहे हैं और अभी 3 भी है. एक होता है विनिंग और एक होता है विनिंग के बाद की जर्नी. सो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ जहाँ पे आप अपने विनिंग के बाद की जर्नी के बारे में बात करें. सो एक बिजनेसमैन कैसे बनता है? अगर आपके पास वो करेज है, अगर आपके पास वो एटीट्यूड है जिसे आप पूरी दुनिया में दिखा भी सको अपने आर्ट के साथ. और जैसे आपने अभी यहाँ मेरे कोलीग्स लाइक हीना, शीरीन को देखा, सुना कि कितने कॉन्फिडेंट थे बात करने में. इट डिडंट कम ओवरनाइट. इट केम आफ्टर लॉन्ग years of working there,
सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ग्रोथ ओनली कम्स टू पीपल हु compete within themselves and not with others. Hey everyone, it's been an exciting day today, meeting all the finalists. They are a super lot, so creative and so great. Can't wait to see them work tomorrow. See you all tomorrow. A day, amazing. I had a lot of fun and so did the contestants, but I'm waiting for day 2. Ciao. Day 1 खत्म. बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा एक्साइटमेंट आज हमने कैप्चर किया इस डे 1 के मेंटोरिंग सेशन में. आज हमने ये देखा कि उनकी सारी रणनीतियां कैसे वो कल यूज करने वाले हैं फॉर द प्रेप डे. सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी द डे 2. Tara, I'm seeing you tomorrow and meeting them too. Take care.